अरे फाल्गुन, हेलो भाई, कैसे कैसे चल रहा है सब? बस थोड़ा इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा है, वही देख रहा हूँ। अगर वो फिक्स हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट कर लूँगा। आज इंटरनेट नशे में भाई। अगर ये स्टेबल हो गया तो मैं स्टार्ट कर देगा। स्टेबल हो जा इंटरनेट। भाई इंटरनेट स्टेबल इज नॉट हुई। हम क्या करेंगे हमको पता नहीं। एज सुन एज द स्टेबल इंटरनेट हुई विल बी स्टार्टिंग। प्लीज जल्दी से इंटरनेट स्टेबल हुई नहीं हुई हो जाएंगे। ये क्या अपडेट है भाई इसमें? बैकग्राउंड में और क्या चल रहा है भाई? ये नहीं चाहिए। तो करते हैं पॉज, इसको करते हैं आगे जाके और इसको करते हैं उस पर। भाई इसको पॉज करना है मेरे को। हाउ कैन आई पॉज दिस वन? ना आई कैंट पॉज। ये नहीं होता पॉज सर। इसको बंद करो, इसको बंद करो, स्टीम को भी बंद करो। और क्या बंद कर सकता हूँ जिससे मैं रिसोर्सेस और बचा सकता हूँ? एक कुत्ता नहीं भोगना भाई। इसका और एक 1 GB का अपडेट आ गया, भी इन गेम आया। डाउनलोडिंग रिसोर्सेस। और कैसे चल रहा है हाल चाल? अरे फाल्गुन भाई, बाय द वे तुम स्ट्रीम कैसा देखते हो? मोबाइल डेटा पे देखते हो या वाईफाई पे, कैसा देखते हो? बढ़िया, मोबाइल डेटा। ओ इतना वो मतलब बचता है इंटरनेट देखने के लिए, क्योंकि स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाता है ना। मतलब हाँ, तुम्हारा वो होगा ना, डेली का 1.5 GB वाला होता, वो लिया होगा ना, राइट? 1.5 GB का, 1.5 GB का डेली लिमिट वाला। बट फिर भी रे, मैं जब यूज़ करता है मोबाइल डेटा पे, मेरा 1.5 घंटे में अराउंड ख़त्म हो जाता पूरा 1.5 GB का लिया भी होगा तो। अच्छा है भाई, मोबाइल डेटा तो अच्छा है यार। और आज रात को सीरियस से हम ख़त्म हो जाए भाई। ओ 11 बज गए, पता भी नहीं चला है। 11 बज गए? कौन से 11 बजे भाई?
रेफरेंस तो दो, किस बारे में बात कर रहे हो? 11 बज आज इस टाइम पे कैसे स्ट्रीम भाई? टाइम मिल गया, आज कर लिया। बहुत दिन से इसको खेला भी नहीं था ना गेंशिन को। इसका अपडेट आया वो देख रहा था भाई। जैसे भी टाइम मिलता है कर लो भाई, ये टाइम पे मिलता है। इतने दिन टाइम नहीं मिल रहा था ये टाइम पे करने के लिए। रोहित से रात को तो करना है, क्या करना है अपना। रात को देखता हूँ 8 साढ़े 8 के आसपास आने को देखता हूँ, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। फिर भाई मेन शेड्यूल फिक्स करना है, पता है बहुत लेट हो रहा है। कभी कभार रात को बहुत लेट हो रहा है। स्ट्रीमिंग के चक्कर में मेरा स्लीप सैक्रिफाइस हो रहा है थोड़ा बहुत। आई मीन इतना भी नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। मैं उसको कवर अप कर लेता है सैटरडे संडे सो के, बट हो रहा है थोड़ा बहुत। मतलब मैं कितना सोता है, 6 से 7 घंटा सोता है। अराउंड मेरा भी 5 घंटे का ही नींद होता है। अरे हाँ, अगर तुम लोग में से कोई भी फेसबुक यूज करता होगा ना, फेसबुक पे अगर लगे तो फॉलो कर देना, बस ये नाम से है। उधर ऐसे बना के रख दिया है। मुझे ट्यूशन जाना है, मैं चलता हूँ, और अगर हो पाए तो रात को जल्दी आ जाना। ओके ओके ओके, ठीक है, जाओ ट्यूशन जाओ भाई। ट्यूशन जाना ऑनलाइन होता है ना तुम्हारा क्लासेस, कि जाना पड़ता है? जाना पड़ता है तो ठीक है भाई। जाना पड़ता है भाई। जाओ बाय, रात को मिलते फिर। कोई बाय। फाइल वेरीफाइंग फाइल इंटीग्रिटी कर ले भाई। जाओ भाग ससुरे से, भाग यहाँ से, जल्दी निकल। दिखना नहीं चाहिए चैनल पे, तू भाग यहाँ से। पगले, ये तो प्यार है भाई, तो प्यार होता है। हो जा, लोड हो जा। यार मेरा हाथ को क्या तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हो जा, लोड हो जा ससुरे, जल्दी हो जा। हो जाओ लोड सर, जल्दी लोड हो जा। पूरे फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हो रहा है आज भाई। दोपहर में इसके लिए नहीं करता भाई, इंटरनेट का फ्रेम ड्रॉप्स बहुत होता है। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, बट हो रहा है भाई। कभी तक कर रहे स्ट्रीम? अभी 3 बज गया ना, अराउंड समझ लो 6 बजे तक, तो 6 साढ़े 6 मैक्स
3 घंटा तो करना पड़ेगा ना। और देखते हैं आज स्ट्रीम कैसे जाता है, उस हिसाब से फिर पढ़ा जाएगा। और प्रिपेयरिंग टू लोड भाई, मर जाएगा भाई, पीसी मर जाएगा, आई मीन लैपटॉप। बस कर भाई। प्रिपेयरिंग टू लोड। चलो तब तक आ जाऊंगा मैं। आओ आओ, हो जा लोड। अभी तो ऐसा लग रहा है एक ये ले लूं, ऐसा फील हो रहा है एसएसडी का यूज़ होगा मे बी भाई, लेकिन नहीं यार, पैसा नहीं है। देखते हैं। चैनल थोड़ा बढ़ गया, फिर मेंबरशिप का कुछ करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा यार थोड़ा बहुत। बट सेम चीज़ है यार, वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा तो ही होगा, नहीं तो कैसे करूँगा भाई। जी भाई, मेंबरशिप लगने के बाद थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, कुछ तो एक्सक्लूसिविटी देना पड़ेगा ना मेंबर्स को भाई। उसका कुछ सोचा ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं सोचा। आज वीडियो डालना स्टार्ट कर देगा तो जल्दी हो जाएगा, बट उसमें और एक चीज़ करना पड़ेगा। कैन यू प्ले विथ मी? अच्छा, ये किसने लिखा? अभी जस्ट लिखा क्या किसने? 21 ना। I'm the survival expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. कैन यू प्ले विथ मी? डोंट प्ले विथ मी डोमेन फॉर अ वेपन। ऐसा पूछ रहा है वो, उस दिन का था ना वो भाई। ये वेपन वेपन का पूछा है। Nice to meet you. भाई जोंगली आ गया, जोंगली। विश कर सकता हूँ क्या मैं? 10 विश होगा क्या? यस, हो सकता है। शार्प शूटर। ओ अरे भाई, यान भी नहीं चाहिए भाई, लेवल 4 वाली मिली है। आई मीन स्टार 4 रेवन बो लेवल 3 ब्लैक फ्यूरियस शैडो थ्रिलिंग टेल्स ऑफ ड्रैगन स्लेयर। आई भाई मिली तो मिली है, मेरे कॉन्स्टलेशन कर लेता हूँ। भाई क्या स्कैम है भाई, 1 2 3। Oh, fleeting colors in flight. May the fortune find you. टेस्ट रन। अभी किसका टेस्ट रन है? इनका टेस्ट रन है भाई। ओह, क्रिस्टल ना क्या? स्टारडस्ट एक्सचेंज में तो नहीं है कुछ।
ओके ये ले चुका हूँ मैं वैसे। परचेस विथ प्रीमोजेम नहीं भाई, नहीं लेना। Every 10 wishes is guaranteed to include at least one 4-star or higher item. नहीं मिला ना, बट जंगली जंगली जंगली। देखो उसके पहले हम कर लेते हैं कमीशन। इसके बाद मुझे जो रेपुटेशन का करना है वो इसका करना है एंड लियू का करना है। Boom boom! Windblade! Eye for an eye! Motion to compel! Time for your arraignment! Flood of frost! Shudder! Speed of light! यस डन भाई। इसे तो बहुत इजी हो गया मारने का मुझे, काइंड ऑफ। भाई ये अच्छा था। अरे पहले वो कर लेता हूँ। एक्सपेडिशन रिवॉर्ड। Add as बेनेट लगा दे इसको और एम्बर को भेज दो। यहाँ पे हमको ज़्यादा चीज़ें क्योंकि नहीं क्वीन क्वीन की नहीं 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 क्या बोलते थे उसको। The video game female character, by the way, at all. It's not forward one, but rather Kuching. Kuching. Kuacha Kuching. Kuching. ओ विंड ग्लाइडर मिला ना। या आई हैव द विंड ग्लाइडर। भाई ये अच्छा लग रहा है वैसे इसकी जगह पे। ओए आपको कौन सा विंड गाइडर लगाओ सर? ना यार इसके लिए थोड़ा वही सब से ये लगा देगा। Benny's Adventure Team! ना नहीं मिला है, इसको भी ये वाला ही दे देता है। तो एक्सपेडिशन
had asked. 5/5 लगा दिया, ठीक है। नाउ आई हैव टू गो, इसमें माइंस हो गया, और तक इसको मैं ये कर देता हूँ। ये क्या है? टू होल्ड। भाई ये भी बना सकता हूँ, ये भी बना सकता हूँ, और ये तो बना ही सकता हूँ, ठीक है। और ये तो बना, प्रोटोटाइप बना सकता हूँ। ये बना ले भाई, ये भी बना ले, और ये तो फिलहाल बना ही सकता हूँ। फुल हो गया, ठीक है। ये होते ही रहेगा, तब तक हम मिशन करके आता हूँ। डिलीट, सब कलेक्ट भी करना है। Incoming. Dandelions. Windblade. ये उठा लो सर, फिर उसके बाद ये करना है, इवेंट भी करना है, बहुत कुछ करना है भाई। Beg for mercy. Speed of light. Got lucky that time. Don't blink. उसको लगो भी रहा Speed है। of light. गया कि नहीं गया? गया। Incoming. Cut to the chase. Incinerate. Rack and ruin. Speed of light. Incoming. I condemn you. Vengeance will be mine. Boom! खत्म 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 खत्म। Yeah. More speed. अरे ये नहीं, ये करो, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गो यहाँ पे, एंड इफ एनीबॉडी इज वाचिंग लाइक मार दो तो। आई मीन कितना करना है आज? आज भी 15 का ही रखते हैं, अपना 15 का कैरेक्टर अच्छा है भाई। 15 लाइक्स का टारगेट। हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो भी नो इश्यू ब्रो। इसको पिन करके रखता हूँ एंड चलिए
More speed. So I have to go to this side, right? इसको मार्क करो. More speed. फल दे दे, फल फ्रूट. More speed. इधर क्या है, क्या कुछ या क्या? नाइस म्यूजिक. ये साइड है क्या? कुछ चमकरा वगैरह तो नहीं ना? ना. Invincible evidence. Speed of light. Nowhere to hide. Eye for an eye. Incinerate. Hit. Incoming. Boom boom. Don't blink. I condemn you. Motion to compel. Incoming. Super effective. Bye. Complete. This one is complete. Berries. Shudder. More speed. More speed. वाह. अरे 4 GB पर डे था, अब 2 GB पर डेटा कर दिया, कम कर दिया कंपनी वालों ने भाई. लेकिन मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं क्या? आई मीन तुम बहुत पैसा बचा सकते, बहुत. सुनना होगा तो बताता, मतलब तुमको सुनना है तो मैं बता देगा अगर टाइम होगा तो अभी. लेकिन ये ट्रिक बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने बंदों को ही पता होनी चाहिए. बताओ बताओ. हाँ तो ट्रिक ये है, 1 साल की वैलिडिटी वाला प्लान जो होता है ना, सबसे कम से कम वाला, डेटा पे मत जाना, सबसे कम से कम वाला वैलिडिटी वाला प्लान लो 1 साल का, जो भी था 1200-1300 रुपये का जो भी है, और उसमें तुमको सिर्फ 6 या 8 GB ऐसा कुछ मिलता है, 12 GB ऐसा समथिंग कुछ है. तो 12 GB कब तक चलेगा वो? जब तक तुम्हारा वैलिडिटी है, समझ रहे हो? 1 साल में कब तक भी चल जाएगा. उसका ट्रिक ये है, 12 GB बिंदास तुम जैसे यूज़ करते हो वैसे यूज़ कर लो, और उसके बाद 100 रुपये का टॉपअप आता है 30-40 GB का. मतलब वो वैलिडिटी कैसा चलेगा जब तुम टॉपअप मारोगे डेटा का, कि तुम्हारे प्लान का वैलिडिटी पे चलेगा. तुम समझ रहे हो? तुम्हारा यूजेज जो हिसाब से होगा ना, वो हिसाब से मार देना. ऊपर सिर्फ 200 या 200 नहीं, हाँ 200 या 300 रुपये में तुम्हारा काम हो जाएगा. तो तुमको अराउंड अच्छा खासा GB डेटा मिल जाएगा तुमको, समझ रहे हो? तो वो फ़ायदा होगा. मैंने वही किया है, बहुत काम का चीज़ होता है. मैक्स वैलिडिटी वाला ले लिया, 1 साल वाला ले लिया, उसमें वैलिडिटी भी मेरे को काइंड ऑफ 15 या 20 डेज एक्स्ट्रा मिला था. मेरे लिए कुछ ऑफर था, तो मेरे को प्रॉपर 365 डेज का मिला है अभी. मैंने ले लिया है वो.
और उसमें सिर्फ डेटा का टॉपअप मार दिया, बात खत्म भाई। और वैलिडिटी कैसा है पता है, जब तक मेरा डेटा खत्म नहीं हो रहा है, डेटा नहीं मतलब मेरा रिचार्ज का कॉलिंग का वैलिडिटी है वो मेरा डेटा में कन्वर्ट हो गया है, समझ रहे हो। तो अगर मैं यूज़ भी नहीं कर रहा ना तो मेरा डेटा भी ये नहीं हो रहा है, डेली का जो लिमिट होता है ना 1.5 GB वो वेस्ट नहीं जा रहा है, समझ रहे हो। रोज़ तो 1.5 GB को यूज़ नहीं करता है, मैं खुद नहीं यूज़ करता, नहीं होता यूज़ नहीं है, समझ रहे हो वो हिसाब से। तो वो एक चीज़ है, बहुत फ़ायदे का है, मैं करके रखा है। बट हाँ उसमें 1 साल का रिचार्ज मारोगे तो उसमें एक नुकसान ये है, अगर तुमको बीच में तुमको अपना ये चेंज करना है, क्या बोलते हैं, अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर चेंज करना चाहते हो उसमें, तो वो नुकसान जैसा चीज़ है। अगर तुमको वो इशू नहीं आता है बार बार चेंज करने का तो ठीक है। वो एक फ़ायदा है। और वो सेक्शन में जाना जहाँ पे अफोर्डेबल रिचार्ज मिलता है ना, एयरटेल लाइव या जियो का जो भी है उसका अलग से एक सेक्शन होता है अफोर्डेबल पे, वो वाला प्लान लेना। उसमें वैलिडिटी मैक्स मिलता है, बहुत कम में मिल जाता है। मैंने यही करके रखा है, मेरा बहुत पैसा बचा है, More speed. डेटा भी वेस्ट नहीं होता, सब मिल भी जाता है। बस ये ट्रिक बाहर नहीं जाना चाहिए। Boom boom! Don't blink! With sword comes shadow. Income! Prepare to be blown away! बस ज़्यादा लोगों को क्या शेयर मत करना है ट्रिक। तुम भाई अपने बंदे के लिए बता दो, मस्त ट्रिक है। Flood of frost! Don't blink! Hey! Motion to compel! Time for your arraignment! Incoming! Windblade! Cut to the chase! ओके उसके अरे मेरे को तो 84 डे का करवाता हूँ, नाइट में अनलिमिटेड डेटा 12 से 6। अच्छा तुम्हारा वीआई है क्या, वीआई है ना तुम्हारा कार्ड कौन सा है वैसे, वीआई होगा लिमिटेड बता रहे तो भाई, तो फिर तुमको बहुत फायदा होता है, वीआई का कार्ड है तो। मेरे इधर सिग्नल नहीं यार उसका वीआई का अच्छे से, मेरे लिए नुकसान वाला चीज़ है। यस मेरे को लगा है, मैं भी स्टार्टिंग, लेकिन उसका 4G है क्या वीआई में, मेरे एरिया में उसका सिर्फ 3G सिग्नल आता है। मैं वही सोच रहा था लेने का, बट Speed of light! Incinerate! Nowhere to hide. कहाँ से मारा रे। Speed of light. यस 4G भाई, तुम्हारा अच्छा है भाई, मेरे को 4G नहीं मिलता है यहाँ पे, मैं परेशान हो गया, नहीं तो मैं कार्ड ले लेता वीआई का। मेरे इधर पता है एयरटेल का सिग्नल अच्छा है, इसके लिए मेरे को मजबूरी में एयरटेल यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जियो का प्लान सस्ता है काइंड ऑफ, ऐसा देखने जाओ तो। सही है भाई, तुम्हारा नसीब अच्छा है।
You give, you receive. मतलब उसमें तुमको अगर मैक्स स्पीड कितना आता है, मैक्स स्पीड का बताएगा तो मुझे एयरटेल जितना प्रोवाइड करता है ना 4G का, मुझे पूरा स्पीड आता है। लेकिन उसको एक ऐसा जगह है उस पर मैं प्राइम वीडियो का 1080p चला सकता है टीवी पे, इतना अच्छा स्पीड आता है, विदाउट बफरिंग चलता है एयरटेल का। मेरे घर पे इतना अच्छा चलता है। बट उससे कॉन्ट्राडिक्ट करने जाएगा तो जियो का इतना गंदा चलता है भाई, बहुत गंदा चलता है। इसके लिए मेरे को मजबूरी हो के एयरटेल यूज़ करना पड़ता है, मेरे इधर सिग्नल नहीं आता ना दूसरा प्रॉपर। जियो आता है बट यार वही चीज़ हो गया, उन लोग का सिग्नल मेरे एरिया में प्रॉपर नहीं है। और VI का तो भाई 3G आता है सिर्फ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसको। हो गया क्या ये कमीशन? या डेली कमीशन इज डन। नाउ आई विल ट्राई दिस इवेंट, गो टू द क्वेस्ट। डेली कमीशन रिवॉर्ड ले लेते हैं। 15 MB डाउनलोड, नाइट में अपलोड, पता नहीं। अच्छा या फिर अच्छा मतलब तुम्हारा मतलब ऐसे नहीं समझेगा। तुम YouTube कितने पे देख सकते हो विदाउट बफरिंग, वैसे बताओ। हाँ ऐसा समझ जाएगा, ये बेस्ट होगा। Add Astra. Thank you for complete. मैं एयरटेल का अराउंड 1080p 60 FPS विदाउट बफरिंग देख सकता है, बट वही चीज़ है आधे 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स में भी हो जाता है कभी कभार। और मैं बैकग्राउंड में यूज़ भी कर सकता है, इतना अच्छा चलता है एयरटेल का। बट जियो का गंदा है भाई, 240 भी नहीं चलता है अच्छे से, 240p भी नहीं चलता है, ये चीज़ है। बट हाँ एयरटेल में मेरे को फोर्स करना पड़ता है 1080p पे क्लिक करके, मतलब क्वालिटी मेरे को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है तो चलता है। कमांड। Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh, why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. अभी तो मस्त Have चल रहा someone है sort the orders by type फिर for अच्छा है now. भाई। I'll deal with them myself 2K का इतना shortly. जरूरत नहीं मोबाइल में Oh, वैसे। how wonderful. ठीक है। Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, तू रुखा ही तो I है। need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. तो जाओ ना सर। I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilion? पर डेटा Oh, को I बचा see. बचा के यूज So करना you've पड़ रहा entered है, वो Lady तो है Ningguang's भाई। contest वो as है। well. As well? एक चीज बताता, मोबाइल पे अगर देख रहे हो ना तुम स्ट्रीम 480p भी The truth अच्छा is, दिखता है। the Feiyun Commerce Guild 720p is in करने का possession of some जरूरत नहीं है। Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case,
I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. वही ना कितना greatly inflated ही तो है. Sunset Vermilionite? Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? ना. Who? Never heard of Sea them. Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, disrespectful? With him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. चलो. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. चलिए. तब तक मैं इनसे बात कर लेता, छोटा मोटा जो मिशन होता है. अरे ओके. तो ये ऊपर है, राइट? What's the matter? I'll do it. अब कहाँ जाना है, ये साइड जाना है, सर्च करना है, वहाँ पे हो जाएगा. इतना ज़्यादा भाग रहा है, मैं इसमें इतना ज़्यादा भाग रहा है. Quite a downpour. Nothing will get done until it clears. Let this be a lesson to those who yesterday said I'll do it tomorrow. आज tomorrow. ओह, अब जा सकता हूँ यहाँ पे. नाइस.
नाइस वन। अभी मिशन कर लेगा। Let's see. Shincho said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. भाई क्या कर दिया इसने? This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? चलो भाई इसको फॉलो करना है अभी क्या। थोड़ा खाना खा लेगा स्टैमिना वाला तो काम आ जाएगा। एचपी रिस्टोर नहीं, स्टैमिना भाई, स्टैमिना। डिक्रीज स्टैमिना यूसेज। नहीं The Sealy got to here and then 71 चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसमें ओ एक कवर अप वाला भी चाहिए, ठीक है। जियो चाहिए इसमें, जियो जियो जियो। तो ये ले लो क्या? यस ये ले लेता है। Don't disappoint me. मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं ये ले लेगा। Ready for reconnaissance. इन लोग को ले लेगा। चलिए मारते हैं सबको। भाई weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset Vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, Sealy. it's gone and snuck beneath the clouds. सीली को And now that Paimon takes a closer look, the Okay. rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below? What do These are you not Shen? real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Okay. वो मेरे साथ शेनहाई भी है। वाह भाई भाई भाई, शेनहाई से मार देगा मैं। शेन ही Manifest! Obey! Don't blink. It's nothing. Unleash! मारा क्या? यस। Motion to compel. लगा दो यहाँ पे। एक लगा दिया और now what?
You must first activate क्या? You must first activate. Incinerate! Speed of light! Inadmissible evidence! With sword comes shadow. अरे भाई मार दे भाई तो मैं चढ़ क्यों नहीं पा रहा यहाँ से? चढ़ गया Manifest! Obey! भाई Do your master's bidding! अरे काइंड बहुत अच्छा चीज है भाई जाने के लिए। ओ भाई ये तो मारते रहते वाह। है करता ससरा। ये हो गया। उसके बाद हमको जाना है ऊपर उड़ते हुए, राइट? भाई बंद मत हो भाई बार। Motion to compel! Okay. Destroy the seal को It destroy appears that we've been करना। taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Unleash! Rack and ruin! Vengeance will be mine! Incoming! Boom boom! Huh. Cut to the chase! Don't blink! Your life is mine! Don't waste my time! Cryo incarnate! Incinerate! Eye for an eye! Speed of light! Nowhere to hide! Obey! The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Don't blink! Manifest! I condemn you! Boom boom! Incoming! लग जा। Take your true form! Unleash! Break your tune। ओ भाई गई। And fog clears along with the Is everyone okay? Look! Cecilia disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. In your dreams! Do your master's bidding! Incinerate! Hey! Cut to the chase! Transfiguration! Manifest! Eye for an eye! It's nothing. Motion to compel! Don't blink! Boom boom!
time. Give up. Incinerate! Incoming! Inadmissible evidence! Nowhere to hide! Submit! Don't waste my time. Take your true form. Obey! By ordinance divine. Flood of frost. Give up. Your life is mine. Speed of light! My will embodied. Manifest. Don't blink! Do your master's bidding! Obey! अरे लग जा जल्दी। Head to the chase! हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ये उठ क्यों नहीं रहा है? अब भी उठा। We're gonna fall! This time we're really gonna fall! So high! Luckily there was a pool of water at the bottom. Otherwise that could have ended very differently. कुछ डिफरेंटली बचा देता भाई। एवरी 10 सेकंड। इनका क्या बढ़ा देता हूँ? थोड़ा अटैक बढ़ा देता हूँ और थोड़ा डिफेंस पे। डिफेंस अच्छा हो जाएगा तो फिर मारने में तकलीफ नहीं होगा। Hey! That series on the move again! Let's catch up with it! Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. ये धक्का भाई। ले लिया उसके बाद नहीं जा सकता ये। ओके चला तो गया, बट मुझे ये साइड भी देखना हो क्या है। और जा सकते हैं ना। डन। उसके बाद दिस वन इज ऑलरेडी डन। सामने जाते हैं तो आई हैव टू गो फ्रॉम दिस साइड। Don't waste my time. Motion to compel. Incoming. Hey! Manifest. Wrath of the flame. Boom boom. Don't blink. It's nothing. Nowhere to hide. Incoming. Crush. Obey. I condemn you. Freeze to the core. Don't waste my time. Don't blink. Unleash.
Don't waste my time. Motion to compel. Speed of light. Hey! Unleash! Manifest! Incinerate. Give up. Rack and ruin. Transfiguration. Don't waste my... The victor has been decided. With sword comes shadow. Transfiguration. Obey. Cryo incarnate. Time for your arraignment. Motion to compel. Rack and ruin. Flood of frost. Incoming. Nowhere to hide. Got lucky that time. Eye for an eye. I'll be back. भाई मार तो दिया था यार इसको। Take your true form. Boom boom. Don't blink. भाई साहब अब ये क्या हो गया? तो ये एक डोर खुल गया, ठीक है। बीवी यहाँ पे इनको जिंदा करो यार। पहले इसको जिंदा करता हूँ तब तक, और इसको मैं खाना खिला देता हूँ। इसको जिंदा करने के लिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। जल्दी जल्दी बढ़ जा भाई। ओ मुझे ये साइड जाना है ना, राइट। मैडम का हेल्थ नहीं बढ़ रहा है। ये मैडम का क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये मैडम का तो चाहिए था, बट ये मैडम का नहीं बढ़ रहा है। ओ भाई Adapted sunset vermilionite? यस, फेमिलियर तो लग रहा है, बट ये चीज जाके ही पता चलेगा। भाई साहब यहाँ पे और एक एक्टिविटी। ओह नाइस वन। यहाँ पे सीट का ऑप्शन है, बैठो। टीपॉट नहीं, गैजेट में जाके Alt F1। अरे फिर से ले लिया ना। Alt F1 ले लिया, स्क्रीनशॉट। Cannot use in domain, ठीक है भाई, डोमेन में नहीं ले सकता। 21 सेकेंड्स है भाई, यानी
या भाई जल्दी 14 सेकंड्स। यहाँ पे क्या करना है वैसे? Is this it? Is this the sunset vermilionite? Yeah. It's so huge. So is the Jade chamber. It needs to be a big to get the whole Jade air. That's true, but then again, why isn't it floating? Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. Yeah, if we bhai. activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too. But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely. Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a Prostrate sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. I want menstruation. My safety. That's right. Paimon's sure you can handle it and everything. But if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. Thank you. I'll go on ahead with the Prostrate. Let's meet at the building site later. Yeah, right. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? भाई अकेले लेके गए वो रॉक को? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. ओके, बिल्डिंग साइड मीट करना है, ठीक है। लीव डोमेन। भाई ये तो बहुत जल्दी हो गया। वहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे चलेंगे तो जल्दी पहुँच जाएगा। जल्दी के जल्दी डायरेक्ट उड़ते हुए जाओ। भाई डोमेन्स भी करना है आज का। हो गया। Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest Prostrate specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we helper found? helper Pretty amazing, right?
In truth, it is the finest piece of plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Shenhua! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold her head up high and break into a big smug smile. I can totally I've had understand. similar compliments before. वो परेशान हो They गई है call me an कॉम्प्लीमेंट से. adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? नहीं समझ सकता. Are you all right? अरे तो इसको क्या हो रहा है? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. All right? Seriously, don't punish yourself like this. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. चलो होटल जाना भाई. ये क्या है यहाँ पे? Reach Shanghai. Near to the makeshift hotel to take a break. Talk to the hotel owner. Okay. उसको होटल एक दिलाना Hi है. there. Checking in, are we? You're Yeah. just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. Have a good rest, Shen. See you tomorrow. इवेंट का स्टोरी कर रहा हूँ. वो चल रहा है मेन गेम का. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? वही तो. Let's go and say hi. वाह भाई इसको भी हाय बोल रहे. ओ इसको मैंने ला के दे. राइट आई रिमेम्बर. भाई इसको जिंदा कर लेता हूँ तब तक. ये वाला है ना. जिंदा हो जाओ मैडम. तब तक तुम थोड़ा खाना खा लो. ये लो.
बोलता भाई ऐसा चलता सब. One trusts you have met Shen-He. So, are you getting along quite well? Yes. So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shen-He to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen-He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen-He is human. Oh, right. Wait, so. what? What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Yes. Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shen-He by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shen-He, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remain only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shen-He may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though! Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. So when Shanna talks about her master, she means... Indeed. It is one to whom she refers. Shen-He has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well.
भाई ये कौन था? It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe ब्रो because मेल you were देखो नया worried आउटफिट about फॉर her, कैरेक्टर. didn't यस you? मैंने देख लिया स्टार्टिंग में. चालू कर दे You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. देखता हूँ ब्रो. तब तक किल तुम लाइक Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. चलिए रेस्ट करना है. रेस्ट टेलिंग में चेक द मेल. ये तो इवेंट है राइट. मेल में So, मेल में तो नहीं आया भाई कुछ. डेमोल है. oh, no wonder she doesn't like being treated as an adeptus. How did... सवेरे कर देता हूँ. We should look for. Hey! So, Shenhe... Master has relayed my situation to you, I take it. Yes. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is Very talkative. very talkative. Sorry, Shenhe. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhe. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor,
Far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. We should look for a new investment. Mora doesn't grow on trees. पूछना है भाई इसको पूछ लेते हैं Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And hey! Person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto? You're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow! So it looks like the 3 of us are competitors now! Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us.
Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does that change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. These wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? कि मर्दों वाला काम करके आया हूं मैं। मार दो। हे ब्रो आई एम बैक। आ गए वापस। भाई ये क्या है भाई, अपने आप ओबीएस बंद हो गया था अभी फिलहाल 1 मिनट के लिए। भाई ऐसे मेरे साथ क्यों होता है सर? ऐसा ना करो सांस। Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. See you later. Okay, let's go!
Hey, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. भाई साहब अब वहां पे जाके किससे करना है बातचीत? इससे बातचीत करने से पहले हिला डाला ना पैसा हिलाएगा भाई. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yun. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon, even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Oh. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. Then where do we start? I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron. Are you around real Mount MGB? Tianheng. I have my doubts. local- क्यों भाई क्या हो गया सडनली Mount तुमको? Tianheng. की हो गया सर? Interestingly enough, the story of the Divine Damsel of Devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. बताओ बताओ क्या Perhaps डाउट it लग can रहा है? give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. चलिए. मेरे ऑर्डर दे दो सर. ऑप्टेन. थैंक यू सो मच. मेरे ऑर्डर. मैंने बिग कूलर बोला नो रिएक्शन. तो बोला तो भाई रिएक्शन तो दिया. तुमने सुना नहीं लग रहा है. बिग कूलर बोला कि नहीं मैंने. तो सुना है. ओ यहाँ पे जाना है भाई. इंग्रेडिएंट प्रोसेस कब से करके रखा है, हो ही नहीं रहा है. कुक. ओ ये इंग्रेडिएंट फिर से लेना है ना पूरा. 99
फिश काफ़ी कम है हमारे पास, तो ये ओपन कर देता हूँ इसको पूरा का पूरा। ज़्यादा नहीं बनाता हूँ इसको हैम। नहीं यार, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं बचा अभी। शुगर फुल कर लेता हूँ। जैम को भी फुल कर लेता हूँ ना, ये नहीं, रॉ मेटे नहीं करना है। देखो अभी यहाँ पे जाना है, राइट? तो यहाँ जाने के लिए ये पहले ये कर लेता है क्योंकि हेल्थ बढ़ा रहा है। अरे तुमने अभी साउंड आया नहीं? साउंड आया कि नहीं? बैकग्राउंड में बजा साउंड? भाई मेरे को सुना ही नहीं दिया। ये क्या चीज है भाई? ये कैसे बग होते रहता है भाई स्ट्रीम एलिमेंट्स। हाँ बज ही नहीं रहा, ये क्या हो गया अभी? I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb नहीं आया यार, that I could दूसरा बजा के barely देखो कौन feel सा my legs by the time Sound we command? reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to Bhai, be bug ho gaya. in that village. There was a loving couple who were the wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so यार distraught उसको at the लॉग इन news करके लॉग that आउट it करना broke पड़ेगा, his लेकिन वो फिर spirit अभी and drove लॉग इन him to करके लॉग आउट madness. करेगा तो फिर भी नहीं The चलेगा vile and vicious monster क्योंकि told स्ट्रीम the चालू है, बीच में वो villagers, ऐड नहीं if होगा you अभी want to यार। live, you must sacrifice a child to हो me. गया काम तब। What a nasty piece of work. Ugh. Paimon sure hopes this monster gets put in its place. But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! भाई ये क्वेस्ट मैंने Unbeknownst कब to का anybody करके else, रखा she है, was तुम अभी concealing कर an रहे हो। यस, exorcist's blade. इवेंट पे है ना ये She चीज, approached the इसके लिए monster's कर रहा है। lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, इवेंट from में which दिखा she रहा है अभी मुझे eventually इसके लिए। emerged as the victor. Her extraordinary Archon abilities quest drew है the ना? attention मेरे of को भी the वही लग रहा है। Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, फ्लिचिंग में है the कलर से, paths of फ्लिचिंग कलर। mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, Flitching. destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. सर डेजा का साउंड कब डाल Well, डाल रहा हूँ it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some
लेकिन उसका कूल डाउन चलेगा 3 घंटा, एक टाइम ही चलेगा, सिर्फ एक ही टाइम चलेगा, तेरा बड़ा कूल डाउन भाई क्या हो गया। भाई ये है कहाँ पे? वो चमकता हुआ था। क्या मजाक कर रहे हो? 3 घंटे भाई होती है 3 घंटे के 6 घंटे एकदम प्रीमियम से भी प्रीमियम साउंड है भाई, वो उसको रखना I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals. वेरी प्रीमियम चलेगा, Why don't we try there? वेरी का भी प्रीमियम, वेरी प्रीमियम। ये तो ले लिया, कहाँ जाना? अरे अरे चलो स्टार स्प्लिटर तो मिल गया, अभी दूसरा लेना है। 30 मिनट इज इनफ, ठीक है भाई, रख देगा भाई। 3 घंटे से रहा है 30 मिनट, ठीक है ठीक है। Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? बताओ ना सर। डरता क्या कोई? He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. बता सब्रोसियम के बारे में। भाई बात ही नहीं कर रहा है तो। Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. भाई इसको नाम अरे बोला You're alive. भाई बोलने लग गया भाई ये। So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium, but I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here, so you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. भाई साहब ठीक है भाई। नहीं ये कर लो तुम। Not bad, as far as treasure is concerned. What's this? So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. Deal, bhai, deal. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple.
And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Yes. Then you're worthy of the title, Papa. ठीक है. देखो एक यहाँ पे भी है, मैं वो ले लेगा बाद में, बट इससे पहले मुझे और एरिया चेक करना है यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है. Motion to compel. Incoming. और मिला. So it seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. क्या है यहाँ पर वैसे? This is it. Legend has it that you may find something if you stand in the middle of the lake of the. Look at the direction to the setting sun. Okay. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Let's go back and tell शेनहा को जाके वो न्यूज़ बताना है. ठीक है. शेनहा कहाँ हो शेनहा? One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. Chat sir, मैंने पढ़ा sir, तुम्हारा chat. I'll tell you more about the old time. Thanks, mister. We found some info in the end.
पापा रजित वाला भी पढ़ा, ऊपर वाला भी पढ़ा. Shenhua, look! This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. इसको क्या हो गया? Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth. But now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience. It's okay. I like your version. Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go. Let's go. Can't let someone else beat us to it. वही तो कितना बात करते हैं भाई इन लोग. कहाँ पे है ससुरा ये? एक यहाँ पे और एक कहाँ पे? यहाँ पे. मिडिल ऑफ द लेक जाना है भाई. यहाँ पे जाता उड़ते हुए मिट जाएगा. गड़बड़ नहीं चलेगा भाई, अब नहीं चलेगा वो. मेरे को पता है वो बग हो गया, वो नहीं चलेगा. चला कि कोई फायदा नहीं सर. तू लेक मिडिल ऑफ द लेक खड़ा रहना है बस. भाई मर गई भाई. स्टैमिना खत्म हो गया लड़की का. सेवन 30 ना. 7:30 भाई हम वेट नहीं करेगा. 17:30 है ना. 17:31 से स्टार्ट कर. चालू हो जाए. यस चालू हो. क्या हुआ भाई? Look for the Suborsium. भाई है का लेकिन वो तो लोटस हेड है. ये नहीं चाहिए, ऊपर से ही लेना है बस. ऊपर ही जाना पड़ेगा. यहाँ पे ही लेना है. भाई ये चेस्ट फिर से रिटर्न आया लग रहा है. ऐसा लग रहा है मुझे.
500 more. जहाँ पे इनको मार देगा तो हो जाएगा जल्दी. Incoming! Another test. That tingle? Blood Bye. face blood. Give up. Incinerate! I condemn you! That tingle? Rack and ruin! You're open! With sword from This shadow! sword on shadows. Motion to compel! ये दे दे रे बाबा. मट्टी फेंकता ससुरे. अरे क्लिक हो जा भाई. Speed of light! Wrong test subject. You give, you receive. भाई कितना मिल रहा सामान यहाँ पे. मैंने लूटा नहीं था ये एरिया. ये एरिया रेडिश कैरेट मिला है. बीट ऊपर चलो. और ऊपर नहीं जाने का जरूरत. नीचे आ भाई. यहाँ पे भी चमक रहा है. मैं पता है वहाँ पे ढूंढना है बट मैं पहले ये कर लेता हूँ. इसके अंदर कुछ है क्या? नहीं. मुझे चेस्ट दिख गया था लॉक वाला तो मैंने ढूंढने के लिए आया यहाँ पे. अब ढूंढते हैं ना थोड़ा. कहाँ है वो? दे दो सर. ये है क्या? नहीं यार ये तो नहीं है. देखना पड़ेगा. मिल रहा नहीं है. सर फार्मिंग करोगे? मेरा अच्छा तुम्हारा करना है. करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे सर. बड़े है कहाँ पे यार ये चीज. ओ दिख गया. Speed of light! That's everything we need! Let's head back and report in! भाई एक ही चाहिए था क्या इसको भाई. Curious if Beidou's made any progress. भाई एक के लिए इतना करवाया भाई. कैसे लोग हैं भाई. भाई डोमेन्स फाइट करना पड़ेगा. डोमेन्स फाइट नहीं किया है अभी तक. चलो आ गए आ गए आ गए. फार्मिंग शुरू करेंगे. अब इसको सारे क्या बोलते हैं मटेरियल्स दे देता हूँ. अरे चढ़ ले सर. तो मटेरियल चाहिए था लो. Goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti. I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years.
I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. चलो मैं In fact, चलता I हूँ came रात को specifically आऊँगा to deliver सीधे Adepti सैम खेलने। sigils. ओके Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, maybe it won't work for me to stay here after all. But without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. Yes. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Kru. Where the heart find rest and give up. पैसा ही पैसा मिल गया। रेपुटेशंस करना है इसका भाई। इसका लेवल 4 चल रहा है ना, इसका हो जाएगा फिर। वीकली बाउंटीज का सब लेवल एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन में हो गया पूरा 70% और अच्छा इसका क्वेस्ट करना है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। All tasks have been handed out. How relaxing. नहीं ये नहीं था, ये था ये नीचे वाला। The commissions बहुत मिशन है भाई इसके तो। इसका क्या है? लेट्स मेक अ फ्लावर कार्ड। गो टू द क्वेस्ट। ठीक है, फ्लावर गार्डन का है और ब्लड का है। ओके ये है, ये होगा गैरी का। जल्दी जल्दी क्वेस्ट कर लेता हूँ, हो जाएगा। इसको सिल्क फ्लावर चाहिए, ले। हमारे पास तो है सिल्क फ्लावर, लोग आई मीन मैडम। डन। इसको आयन चंक देना है। आयन चंक भाई कहा? यहाँ पे इसको देना आयन चंक। आयन चंक भी देख के आता हो जाएगा। खाने में क्या है ना? ये नहीं, मुझे स्टैमिना वाला चाहिए, जो ये वाला।
100% stamina return. Incoming! Don't waste my time. Cut to the chase! Incinerate! Breath of the flame! Boom boom! हो गया भाई. Ooh, we can definitely write this off as incidental gains. आयन चंक है ना, ले यार ले भाई. भाई 10 से नहीं होगा इसको, 10 चाहिए आयन चंक. फिलहाल मेरे पास 10 नहीं आयन चंक, तो इसको कहाँ से दे दूँगा. मैंने अभी फॉर्ज कर दिया उसको भाई, नहीं करना था. रॉ मेट मिल गया. तो ये कर लेता हूँ मैं. अब वो अवेलेबल नहीं तो ये वाला कर लेगा, उसमें क्या जा रहा है मेरा भाई. भाग्य से बग के. यार ओके. ले भाई. ये भी क्वेस्ट कंप्लीट हुआ भाई. भाई मैंने आया. ठीक है भाई, ये गलती से यूज कर ले यार. हो जाता पता है उसको देख के, मुझे ज़्यादा यूज नहीं करना होता है. वो ये यहाँ पे क्या कर रही है? Oh, it's you. Seaside. Chi-Chi is helping with the... Yes. So... But... If danger comes, Chi-Chi will protect... Don't go near this... भाई इसमें इतना सारा मैंने लिखा हुआ है, बट ये मे भी मैंने पूरा क्वेस्ट कंप्लीट कर दिया है. इवेंट में अगर जाऊँ मैं गो टू क्वेस्ट करूँ. 7 days. ओ भाई remaining time remaining 12. okay. ये तो हो जाएगा. भाई रिवॉर्ड लेना था, मैं क्या रे भाई. भाई एक गैजेट मुझे बनाना है इसमें.
मैं बहुत काम का गैजेट है। लेवल 5 का ले लिया, ठीक है। 2-3 ही लेवल वाक्य भी हो जाएगा वैसे। अब क्या करना था, मुझे गैजेट बनाना था यार, रिमेम्बर। तो गैजेट कहाँ पे बनता है? उसके लिए मुझे डायरेक्ट फास्ट ट्रैवल करके यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बनता है ना गैजेट, यस। एंड इसमें आके गैजेट सिलेक्ट कर लो। ये भी ये है कि ये है। पोर्टेबल तो नहीं है ये भाई। ये भी नहीं चाहिए। ना भाई, अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं हो चीज़। और कौन सा मिशन भाई? बहुत सारे मिशंस करने बाकी, और बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है। ये मेन करना है ओमनी का। भाई ये भी क्वेस्ट करना है, ओमनी। ओमनी का क्वेस्ट करना है, और इसके लिए कितने दिन बाकी हो? कब तक कर सकता हूँ इसको? इसका टाइम नहीं दिया कुछ। उसके पहले में हम करेंगे डोमेन्स। डोमेन करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करता है, इसको मार देता है। मार के थोड़ा काम आ जाएगा। पार्ट से हेडशॉट मारेगा उसको। I condemn you. यहाँ पे कैरेक्टर चेंज करो पहले। हमें कैरेक्टर लेना है कौन सा? नीचे आइस वाला है, तो आइस वाला कुछ काम नहीं आएगा, ये 2 आना है। यानी फिर ये काम नहीं आएगा। इसमें बेनेट ले लेता हूँ। और You want me on your team? यस, आई वांट यू ऑन माय टीम। और ये एक ले लेता हूँ। There's still a long road ahead. बट मे भी ये काम नहीं आने वाला, मेरे को ऐसा लग रहा है। Motion to compel.
Nowhere to hide. I'm going in. Adventures. Time for your arraignment. That's gonna hurt in the morning. Incinerate! Incoming! Motion to compel! Don't blink! Cut to the chase! Teamwork is dreamwork! Incinerate! Hey! Be gone! भाई मार दिया रे मार दिया Incoming! ये वाला डोमेन फटाफट कर लेगा जब तक चलो भाई दूसरे के कोऑप में चला जाता कोई ना भाई गेम क्रैश्ड भाई ऐसे कौन करता है भाई मैं आता हूँ ठीक है भाई मैं इतना स्ट्रीम रख रहा है बाद में आता हूँ बहुत लगा भाई गेम फुल क्रैश हो गया खुद ओके ठीक है भाई चलो भाई मैं आता हूँ तब तक के लिए आमी गामी MGBGAMi बाय 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 बाय